Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, and today we're going to work out Orpheus. So the poetry that is a big difficulty for the student, those are not been getting the real material for this particular poetry is poetry को पढ़ना कैसे. As I've told you earlier, here पेपर के पॉइंट से सबसे इम्पोर्टेंट पोएट्री से एक है. आपने कहा इसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, जब इस पोएट्री को ढूंढ लगते हैं we'll have the certain other limits from Shakespeare and the other. लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है that what is it all about, क्या स्टोरी लाइन है, पोएट्री का प्लॉट क्या है, कैसे समझ सकते हैं. That is what I'm going to teach in today's class. अगर चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें and do watch the video till last. Let's start the class. The first thing we need to work out is all about a epic, sir. It's an epic, Greek epic. The Orpheus is from the Greek epic, the one who really plays a great lyric. He was the one who can have the charm in his own music. मतलब ऐसा मंत्रमुग्ध करने वाला म्यूजिक था उसका कि पत्थर का उससे चारों तरफ बैठ के खो जाते थे. तो सर इसको कैसे जानेंगे, हाउ गोइंग टू डील विद दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिकॉग्नाइज द टेस्ट के पेपर नहीं आने वाला है, आपने इसको ऑब्जर्व करके पूरी तरह ड्रैग करना है कि यार ये ऑफिस से. लेट्स स्टार्ट द थिंग. फर्स्ट द ईगल incessantly mourning with a sharp piercing cries, the eagle desperately searching for the lost beloved. Masses the rocks chipped, lava cascades down, cave roofs splinters, past follies raw, eyes beckon on the dreams. The mind runs blank in a sudden torrent's descent. Sky eagles reach the underworld. So यहाँ eagle जो highlight किया, प्लीज इसमें ध्यान दीजिएगा. That is जो office उसको highlight करेगा, explain करेगा पूरा. Sky eagles reach the underworld, the ravenous empire of the underworld snakes. Encouraged by the fatal music cast, the boon I repeat, the boon the beloved is yours, but do not look behind. Blind eagles unable to look behind, weeping eagles barefoot to their beloved. Eagles incessantly mourning, underworld eagles reach the sky. What does it mean? यहाँ eagle किसके लिए बोला गया? What is the basic story behind it? So यहाँ पे थोड़ा कुछ जानना नहीं है, पूरी पूरी पोएट्री को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा. That the concept of the great Greek hero. So वो क्या था great Greek hero? That is all about Orpheus. Yeah, he was having a charm. He was having a charm on the music. वो जब म्यूजिक क्रिएट करता था, when he was playing the music, everybody from flowers to bees, birds, and all the animals, even the stones gather around him to listen his perform music. पर हुआ क्या? He was in love. Yeah, he was in love with the girl Orpheus. अब यूरोफिटाइस को प्यार करता था, लेकिन उसको एक और आदमी प्यार करता था, उसका नाम था एस्ट्रोस. So वो भी उसको प्यार करता था. And on the day when they both are going to get married, she was chased by Aristides. Aristides to chase, and to save her life, she ran away from that place. And while running, she just stumbled on a snake and was done by the snake. Sir, उसने काट लिया उसको, and she died. But Orpheus was really crazy about her. He goes to the Hades, really to Hades, just to get back her love. उसको चाहता था किसी भी तरह से वापस लेना था, और वहां जाके उसने उनके क्रिएटर उनके को पूरी तरह से म्यूजिक में बांध लिया अपने, and accept किया that really he have to give her back, and he was really had the permission from the boss of that place कि उसको ले जाए. But there was a condition that he must not look back till he reached safety on earth. But he was really very much impatient and lose his love once again. And then he's saying Orpheus and Orpheus, so till his last breath. So ये एक एक्सप्लेनेशन थी इस पोएट्री की जिसको हमें समझना जरूरी. But step by step जानेंगे, that will better part for us. So guys, please write down things that I mentioned earlier. आप उनको पॉइंट्स में लाता हूँ, आप प्लीज उनको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा कि आप पोएट्री को कैसे ग्रैब करें. The first thing, पहले पोएट्री के कंटेंट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे. This is the content that you guys will need to know by heart. कि पेपर तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. Secondly, write on these, please. The first, a charming young man, I repeat, a charming young man from Greek epic poetry, Orpheus, having a power of music, really having a power of music. He was having a charm of music. He can bound anybody with his beauty. Loved to play magic lyre.
Then, madly in love with a word, I repeat, with a wood nymph called Eurydice. Aristides was in love with her too. With whom? Yeah, Eurydice. He was in love with her too. अब ये जरूरी नहीं कि आप किसको प्यार करते हो उसको प्यार नहीं कर सकता. Yes, anybody can love her. So she was loved by Aristides too. And then on the wedding day he chased. Now her and she ran for her life. Who chased her? Aristides. अब यहाँ उसने उसको चेस किया and she ran for life. And while running, stumbled on a snake and the snake stung her. यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया. अभी तक कहानी बहुत इजी चल रही थी. हमने कहा उसका पावर थी म्यूजिक की जिससे किसी को भी बाउंड कर सकता, स्पेल बाउंड कर सकता पूरी तरह से. इवन स्टोन्स, मैंने कहा पे किया स्टोन्स है, स्टोन्स गैदर अराउंड. तो यहाँ पे वो जॉय को फील करेंगे. हमने बोला कि उसके पावर म्यूजिक को हाईलाइट कर सकते हैं. देन सीक्वेंस वाइज चीज चल रही. हुआ क्या that he was in love with a girl and the girl loved him too, but she was loved by some other guy too. And on the wedding day she was really chased by her. Sorry, by him. और अपने आप को सेव करने when she was running, उसका पैर एक सांप के ऊपर पड़ गया. And she was done. Then stumbled on a snake and was stung, followed her to Hades to get back her. Played soulful music, that is soulful music to charm the captor. To charm the captor. Here we are having charm the captor. Entered by the fatal music grants. Here, to rap, I repeat the vast empire of the underworld snakes. Entrance by the fatal music grants. The boon he love is yours. तो यहाँ हमें वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करता है कि उसने अलाउ किया उसके लव को वापस करने के लिए. And then here we are having agreed on a condition that he would not look until they reach earth. Until they reach earth. Here we are having. But do not look behind. Blind eagles unable to look behind. Unable to look behind. But he did so. As he was impatient lover. And as a believer, we do have something that was not being prescribed by everyone. कहीं ना कहीं वो चीज होती and he lose his love. यहाँ वो प्यार खत्म हो गया. But till end he sings your face. Here the end is there. Agreed on a condition that he would not look until they reach earth. Wandered till he was torn into pieces and song Eurydice till his last breath. So guys, this is a simple poetry that we must work for our paper. तो I hope इस पोएट्री के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ कि यूरोपियस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे. अब यहाँ पे दो तीन चीजें एडिशनली हम इसको क्लियर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरे के पूरे टेस्ट को ऑन टिप करना है. द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू वर्क आउट इज टू क्लियर द टेस्ट बाय हार्ट. पेपर में चांसेस है मैक्सिमम कि आने वाला. तो आपको पूरा क्लियर. अच्छा, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ यू गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस? तो यहाँ पे जो ईगल है इस पे ध्यान दें. दिस ईगल, दिस river, and then Varanus empire and the use of word snakes. तीन चार चीजें हैं जो हमें इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज फ्रॉम यूरोपियस. ये आपको हेल्प करेंगे, आप इजीली ग्रैब करेंगे. देन विद द थ्री कैरेक्टर्स जो आपको ऑन टिप करने. फर्स्ट यूरोपियस जिसको हम जानते हैं उसकी क्वालिटी या यू नो द क्वालिटी ऑफ दिस, ही इज हैविंग अ चार्म ऑफ म्यूजिक, द परफेक्शन दैट ही वाज हैविंग. He can bound anyone, the bees, the flowers, even the stones, for the joy of music. And then the soulful treated, how he just get back her love from the Varanus empire with that charm of music only. And then the quality, one more quality, he was an impatient lover. Those who don't have resistance, that yaar ab nahi dekhna piche. And then when he lose her once again, उसके बाद का फेस, he died just to get back her, was singing for your flights. तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने. एंड द थर्ड एडिशन, द गाय हु चेस्ड हर, जो एक रोल प्ले करता है एज अ विलेन, हमें उसको समझना है. तो दिस इज अ कंप्लीटली ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक एपिक. कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया. Tanshu had done a great job in this particular poetry.
एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वर्क इट आउट। करने का तरीका क्या होगा, पहले आप पूरे टेस्ट को लिखेंगे, टेस्ट को लिखने के बाद पूरी की पूरी जो समरी हमने डिस्कस की इसको अपने वर्ड्स में अभी के अभी लिख लें आप। ये करना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे पूरे टेस्ट को लिखें अभी पेपर पे, लिखने के बाद इस टेस्ट को पूरा अपने बिहाफ पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके, ठीक है। स्क्रीनशॉट यहां से ले लिया हुआ, इसका स्क्रीनशॉट बोले, फिर इसके पैराग्राफ फॉर्म में पूरा लिख लें। एंड व्हेन यू राइट द कंप्लीट पैराग्राफ एंड देन रीड्स जस्ट ट्वाइस एंड यू गोइंग टू प्रैक्टिस। Till then, keep watching, like, share and subscribe. If you think it's worth to watch और थोड़ी हेल्प मिली हो तो लाइक बनता है। बाय गाइस।